आंखें बंद, आइज क्लोज्ड. Spine, head and neck in one line. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. With this breath, let us chant Omkara 3 times. Om. Om. Join your palms together. Let us chant opening prayer. Om Sehna Bhavatu. ॐ सहना भवतु Sehna Bhunaktu. सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. मा वृद्धिशावहै ओम शांति शांति शांति. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा. ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन. मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां. योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं. आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम्. शङ्खचक्रासधार्यं सहस्रशीर्षं श्वेतं. सहर्षशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. प्रणामि पतञ्जलिम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Slowly and gently rub your palms. Even the feet. Cup your eyes with the palm. Feel the warm sensation in your eyes. Looking through the gaps of the fingers, open your eyes with a beautiful smile on your face. Again, good morning. अच्छा, इस बैच में कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन अभी और लोग आएंगे, तो अभी सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है. तो जो मेन जो मैं थ्योरी वगैरह जो बताने वाली हूँ, मैं एक बार बात कर लूँगी सभी से, कौन कौन लोग श्योर हैं तब. ओके. और आप लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं, शैल जी और नीलम जी, और समय जी आपको भी तो सब जानते हैं, यहाँ अभी 50 आवर्स में थी. ओके. सो थ्योरी मैं कल से स्टार्ट करूँगी, और इस बार मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ जैसे कि जो योगा का जो पार्ट है, जैसे जो बताते हैं कि बहुत सारे योगा होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तो भगवत गीता में जो लिखा है उनके बारे में वो भी मैं इंक्लूड करूँगी. आजा आजा. हाँ. और ये और जो है सूक्ष्म व्यायाम में बहुत सारे 48 आसन्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं इंक्लूड करने वाली हूँ. आजा आजा. अच्छा. ओके.
तो स्टार्ट करते हैं आज इस प्राणायाम से। सिट कंफर्टेबली। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, आंखें बंद। कपाल भाती से स्टार्ट करेंगे। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल फोर्सफुली। एक्सहेल विथ योर नोज। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Relax. Inhale. Tuck the chin to the chest. अपने चिन को चेस्ट में टच कराइए, जलंधर बंद लगाइए एंड होल्ड द ब्रेथ. Relax your neck. Exhale. Just observe your mind. Observe the stillness in your mind. Again, take a long deep breath in and breathe out. With this breath, start second round of Kapalbhati. Inhale deeply. Start. 1 2 1 2. फोकस ऑन एक्सेलेशन. जितना एक्सेल हो सके उतना एक्सेल कीजिए विथ फुल फोर्स. और जब एक्सेल करेंगे तो पेट बिल्कुल अंदर. 1 2 1 2 1 2 1 2. Continue. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Relax. Inhale. Tuck the chin to the chest. Hold the breath.
Slowly release. Exhale. Just observe the mind, observe the changes in your body. Again, inhale, exhale. Start doing Kapalbhati. Count on your own 100 counts. 100 times कीजिए at your own pace. Inhale, relax. Inhale, tuck the chin to the chest. Hold the breath. Relax. Just observe the calmness in your mind, changes in your body and mind after Kapalbhati. Observe the stillness. Oh. Now let us do Nadi Shodhan Pranayama. Close the right nostril with the thumb. Exhale from the left. Inhale from the left nostril. Breathe in. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath for 8 counts mentally. Exhale from the right. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Exhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Exhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale from the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold the breath. Exhale from the left. Om 1, Om 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from the left. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. Exhale from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from the right. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. Exhale from the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale from the left for 6 counts. 1, 3, 4, 5, 6. Hold the breath. Exhale from the right, 12 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale from the right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold the breath. Hold the breath. Exhale from the left slowly. 1, 2, very slowly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale from the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold the breath. Very good. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feel your lung. लंग में सांस को होल्ड कीजिए. लंग्स में, चेस्ट में सांस को होल्ड कीजिए. होल्ड द ब्रेथ. एक्सहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Release your hand. Normalize your breath. Normalize your breath. Just observe the state of your mind. Slowly rub your palms. Then repeat. Cup your eyes, looking through the gaps of the fingers. Open your eyes with a beautiful smile on your face. अभी हम लोग 2 क्रिया सीखेंगे. उच्चारण स्थान विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया, और मेधा बुद्धि और चक्षु मतलब आईज की शक्ति विकास क्रिया. ठीक है. सबसे पहले खड़े हो जाएंगे. खड़े हो जाएंगे.
हाँ बेटा। ये अच्छा, ये उल्टा हो गया क्या? अपने हाथों से इतना, ये 4 अंगुली, ओके, दिस, इतना फिंगर, ये 4, और ये एक 5, इतना डिस्टेंस जिनसे नेक पे होना चाहिए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। हाँ, इस डिस्टेंस पे गर्दन को रखना है, एंड स्टैंड इन तड़ासन। हाँ, स्पाइन न्यूट्रल, पेल्विक न्यूट्रल, आईज ओपन रहेंगी, इनहेल डीपली, और जैसे भस्त्रिका में करते हैं उस तरह से इनहेल एंड एक्सहेल, और लेरिंग्स पे ध्यान देना है, जो कंठ है उस पे ध्यान देना है। इनहेल, एक्सहेल, से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 25 बार। कपालभाति जैसा नहीं, पेट अंदर बाहर नहीं जाएगा, बस जोर से श्वास लेना है, छोड़ना है 25 टाइम्स। रिलैक्स, रिलैक्स। समझ में आया? गर्दन पे ध्यान देके सांस को लेना छोड़ना है, भस्त्रिका जैसा। ओके, ये है, ये था उच्चारण स्थल या विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। अब नेक्स्ट है मेधा शक्ति, बुद्धि और चक्षु शक्ति विकास क्रिया, आंखों की शक्ति। तो इसमें क्या करना है, जो आईज है वो शांभवी मुद्रा में रहेंगी और गर्दन पीछे जाएगा। पीठ को पीछे नहीं करना है, सिर्फ गर्दन को पीछे करना है। ओके, सिर्फ नेक को पीछे करेंगे, और आंखें जो रहेंगी वो आईब्रो सेंटर पे उसको रखना है, आंखों को आईब्रो सेंटर पे रखना है, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जैसे अभी श्वास ले और छोड़ रहे थे उसी तरह से श्वास को लेना और छोड़ना है। तो अगेन स्टैंड इन तड़ासना, गर्दन को ऊपर करेंगे जितना हो सके। ठीक है, और पीठ को, बैक को नहीं झुकाएंगे, सिर्फ गर्दन को पीछे लेकर जाना है। इस जगह पे स्ट्रेच फील होगा गर्दन पे। आंखों को शांभवी मुद्रा में रखिए, और इनहेल एंड एक्सहेल जोर जोर से, भस्त्रिका 25 टाइम्स। रिलैक्स, रिलैक्स। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए ज्यादा नहीं करना है, और जिनको वर्टिगो है, चक्कर आते हैं, उनको थोड़ा संभल के करना है। ओके, ये दोनों आज सिखाया है, 48 क्रिया है, तो रोज दो दो करके सिखाएंगे तो आपको याद भी रहेगा, एक दिन में सारा सिखा देंगे तो याद नहीं रहेगा। अब कमर पे हाथ रखिए, लेट अस रोटेट आवर वेस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। हाथों को सामने रखिए। ओपन एंड क्लोज योर फिंगर्स। 1, 2, 3, 4, सुनते हो? 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी बनाइए, धीरे धीरे कलाइयों को घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने हथेलियों को खोल के उंगलियों को पीछे से स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से अंगूठे को लेके पीछे स्ट्रेच। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट हैंड का आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे। 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। अपने हाथों को खोल के शोल्डर को टैप कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Now rotate your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax your hands. Now, inhale up, exhale down. 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 नीचे नीचे होल्ड कीजिए, नीचे होल्ड कीजिए। स्टे, फील द स्ट्रेच इन योर लेग्स, बैक साइड। नी स्ट्रेट, स्टे हियर, स्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Slowly come up. Back bending. पीछे थोड़ा सा बैक बेंडिंग कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ना हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए। ट्विस्ट योर बॉडी टू द राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, center. Again, twist your body to the right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center.
रिलैक्स योर हैंड्स, हाथों को इस तरह से करिए, टैप योर लेग्स अप, 1 2 3 4 20 टाइम्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब राइट एल्बो को लेफ्ट पैर में टच कराइए, लेफ्ट नी में, एंड लेफ्ट एल्बो को राइट नी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Now lift your right leg up, rotate your ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Crunch your toes, crunch your toes. Very good. Left leg up, rotate your ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise, 10 9 8 7 6 5 3 2 1। Crunch your toes, crunch your toes. ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप योगा करो। Now let us do Surya Namaskara. Namaste, namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward, Padhastasana. ठीक हो जाएगा। राइट लेग बैक, योगा के बाद लगा देंगे, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। एक्सहेल, अधोमुख श्वानासना। इनहेल, प्लैंक। एक्सहेल, अष्टांगा। इनहेल, कोबरा। एक्सहेल, अधोमुखा। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, ऐसा संचलन आसना। एक्सहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासना। इनहेल, स्ट्रेच अप। एक्सहेल, नमस्ते। Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back, Asana. Very good. Right leg back, Adho Mukha Svanasana. Very good. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra pose. Exhale, Adho Mukha. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, Namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward, Padhastasana. Inhale, right leg back, Asana. Exhale, left leg back, Adhimukha Svanasana. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, Adhimukha. Inhale, right leg forward. Exhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward, Padhastasana.
Inhale, left leg back, Asusanchalanasana. Exhale, right leg back, Adho Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, Adho Very good. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, Namaste. Mama. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, Adho Mukha. Inhale, right leg forward. Inhale, left leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, Namaste. Inhale, stretch up. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back. Inhale, plank. Exhale, Ashtanga. Inhale, Cobra. Exhale, downward dog. Inhale, left leg forward. Very good. Exhale, right leg forward. Inhale, stretch up. Exhale, Namaste. Breathe in, Hasuttanasana. Hasuttanasana. Breathe out, Padhastasana. हाँ, शैल जी अपना घुटना मोड़ लीजिए थोड़ा, हाथों को साइड में रखिए. हाँ, लेफ्ट लेग बैक, असुसंचालन, राइट लेग बैक, सॉरी, असुसंचालन आसना, राइट लेग बैक. नी डाउन, पीछे वाले नी को डाउन कीजिए. हाँ, लुक फॉरवर्ड. टक योर टो, कम टू अधोमुख श्वानासना. हाँ, पुश योर शोल्डर्स. यस. इनहेल, प्लैंक. वेरी गुड. एक्सहेल, अष्टांगा. इनहेल, कोबरा. एक्सहेल, अधोमुखा. इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड. हाँ, शैल जी, आप पीछे वाले नी को डाउन कीजिए. पीछे वाले नी को डाउन कीजिए और नीचे. हाँ, राइट, दूसरे वाले पैर को सामने कीजिए. पादहस्तासना. लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पादहस्तासना. पादहस्तासन में आ जाइए. इनहेल, स्ट्रेच अप, हस्तोत्थानासना. एक्सहेल, नमस्ते. लास्ट कंप्लीट करते हैं इस राउंड को. इनहेल, स्ट्रेच अप, हस्तोत्थानासना. लास्ट. वेरी गुड. एक्सहेल, पादहस्तासना. इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, असुसंचालन आसना. राइट लेग बैक, अधोमुख श्वानासना. इनहेल, प्लैंक. एक्सहेल, अष्टांगा. इनहेल, कोबरा. मम्मा. एक्सहेल, अधोमुखा. मम्मा. इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड. एक्सहेल, राइट लेग फॉरवर्ड. इनहेल, स्ट्रेच अप. एक्सहेल, नमस्ते. यस, थोड़े स्टैंडिंग वाले आसनास कर लेते हैं. अगेन कम टू तड़ासना. टेक योर राइट लेग बैक. राइट लेग बैक. Right foot 90 degree, left foot inside 45 degrees, hands straight, hands in line with the mat. Stretch your body to the right side. Try to touch the mat. जहां पे हो सके पैर को भी पकड़ सकते हैं जितना स्ट्रेच हो. एंड लुक अप. त्रिकोण आसना.
Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. 7, 8, 9, 10. Slowly come up. Slowly come up. धीरे से. Yes, very good. Now take your left leg 90 degree. Left foot को 90 degree कीजिए. Right foot inside. Push your body to the left. Go down. Look up. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come up. Slowly come up. Come to Tadasana. Let us do Veerbhadrasana. Right leg को पीछे कीजिए. Bend the front knee. Lift your hand up. Stay here in Veerbhadrasana. Stay. 1, 2, 3, 4. Very good. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veerbhadrasana 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Straighten your knee. Change the leg. Change the leg. Veerbhadrasana 1. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Open your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly straighten your knee. Hands on the mat. Parisarita Padottanasana. Head down. 1, 2, 3. Keep breathing. श्वास पे ध्यान दीजिए. 5 breath. 3, 4, 5. Slowly look forward. हाथ को कमर पे रखिए. धीरे धीरे ऊपर आएंगे. Very good. Slowly bring your legs to the center. Join your palm. Sit down on the mat. Open your legs. Open your leg. Shake your leg. Keep your back straight. Inhale. हाथ को ऊपर कीजिए. Exhale. Bend forward. Paschimottanasana. Stay. 1. सांस पे ध्यान दीजिए and go down with each breath. हर श्वास के साथ नीचे जाइए. 2, 3. हर श्वास के साथ धीरे धीरे. श्वास पे ध्यान. सिर्फ श्वास पर ध्यान दीजिए और हर श्वास के साथ नीचे जाइए. अपनी बॉडी को ओपन होने दीजिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then slowly look forward. Inhale, stretch your hands up. Exhale, relax your hands. Very good. Twist your body to the right side. Head down. Bhuna Manasana. Head down. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, center.
Exhale, left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly. Center. Relax your hand. Come to table. जाओ. लाइट है. अंधेरा नहीं, लाइट है. जाओ. Again, come to table. Table में रहिए थोड़ा. Yes. Do the cat and cow stretch. Inhale. Slowly look up. Back down. Exhale, chin to the chest. Lift your spine up. Level in. Inhale, look up. Spine down. As if navel is going towards the mat. Exhale, lift your spine up. Pull your navel up. Tuck your chin to the chest. Inhale, go up slowly and gently. श्वास के साथ कीजिए. Exhale, chin to the chest. Pull your navel in. Inhale, look up. हाँ है तो. Exhale, chin to the chest. मामा मामा मेरे पैर में भी लग गया था. Again, come to table. Lift the right leg up. Straighten the right leg and stay here. Stay here for 20 seconds. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax the right leg. Lift the left leg up. Stay. 1, मामा 2, देखो 3, पीछे 4. देखो मैं Wow. पीछे तो 6. Very good. 7. देखो ना. देख लिया. 9, देखो 10, पूरा पूरा 11, पूरा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. एक पैर से पुशअप करेंगे. राइट लेग अप. हाँ, पुशअप एंड गो डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 times. 8, 9, 10. Relax the right leg. Now lift the left leg up. Do the push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxing child. Relaxing child's pose. Slowly come up. Now come to plank. Come to plank and stay in plank for 30 seconds. दिखा. कैची से लग गया. 30 seconds. कैसी से नहीं लगा. मैं बस केला काट रहा था. केला. Stay. हाँ.
10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relaxing child. Very good. पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए. Now lie down to the right side. Yes. Legs hip width apart. पैर को hip width apart रखेंगे. Lift your leg up and down. पेट को टाइट करके without moving your body. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. सिर्फ पैर को मूव करना है और कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं करेगा. 8, 9, 10. Start clockwise direction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax your legs. Change the side. दूसरे पैर से कीजिए. Lift your leg up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax and lie down on your back. पीठ के बल लेट जाइए. पीठ के बल लेट जाइए. And lift your leg 90 degrees. अपने पैर को 90 डिग्री में ऊपर कर लीजिए. Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 काउंट्स तक 90 डिग्री में होल्ड कीजिए. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. धीरे धीरे पैर को नीचे कीजिए. बिल्कुल धीरे धीरे. बिल्कुल धीरे धीरे पैर को नीचे कीजिए और धीरे धीरे पैर को ऊपर कीजिए. Again, slowly bring your legs down. Slowly bring your legs up. Again, down slowly. Bring your legs slowly down. दोनों पैर एक साथ. And slowly bring your legs up. पूरा डाउन लेकर जाइए. Then slowly take your legs up. Very good. 3 more times. Down. Lift your legs up. Without bending the knees. Knee को bend बिना किए. Down. Up. Last. Down. Up. Relax your leg. Relax. दोनों हाथों को पीछे कीजिए, कान के पीछे. And slowly come up. Come up and sit down. मैं नहीं उठूंगा. Slowly
Go down and lie down. Again, come up. Yes, very good. नहीं और तो पीठ को थोड़ा सा कर्ल करके धीरे धीरे, इंच बाय इंच, आपको नहीं जाना बेटा, धीरे धीरे। अरे वाह, आ क्या, slowly. Again, come up and go down. फिर से ऊपर आइए, इस बार जहां पे अटक रहे हैं वहां पे बॉडी को पुश कीजिए। 1 2, इस तरह से बॉडी को जहां पे अटक रहे हैं उठने में वहां पे पुश कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, पुश कीजिए। हाँ, ऊपर नहीं उठना है, बस वहीं पे अप एंड डाउन करना है थोड़ा सा, जहां पे अटक रहे हैं वहां पे। 1 मिनट। करने पे थोड़ा पेट पे जोर आ रहा है बस, इसलिए। हाँ। ये कोड स्ट्रेंथनिंग का ही है, एब्स बनेगा, एब्स। अगेन लाई डाउन, रिलैक्स, lie down on the back, relax for a while, fold your legs, fold your legs, lift your hips up and down, 15 counts, up and down, 15 counts. 1, lift your hip up and Setu Bandhasan, bridge pose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Again, 15 counts up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Last 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax your legs, relax. Now, मरकटासन, दोनों पैरों को फोल्ड करके दोनों पैरों को साइड ट्विस्ट, then left side and right side. Just twist your body. जब राइट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड देखिए, जब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड देखिए। 10 times. 1, 2, 3, 4. Very good. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lie down in Shavasana. आंखें बंद. Mama. Breathe in. आंखें बंद. Lie down in Shavasana. Focus on the breath. श्वास पे ध्यान दीजिए.
अम्मा अम्मा हम प्यास बोलो प्यास प्यास अपने श्वास पे ध्यान दीजिए. फोकस ऑन द ब्रेथ. प्यास बोलो Count your breath mentally. Count your breath. Om Shanti Shanti Shanti. The practice of Yoga Nidra begins. Kindly lie down comfortably with your legs slightly apart, eyes closed, and body in the pose of relaxation. Keep in your mind that you are going to practice Yoga Nidra. The purpose is not to sleep, but the purpose is to keep awake and keep on listening to me without trying to think very much the meaning of instructions. I am practicing Yoga Nidra should be the form of your awareness during this period. Become aware of the whole body. The whole body which is lying over the floor the whole body which is lying over the floor. Have a quick vision of the whole body which is lying over the floor. In the practice of Yoga Nidra, at this moment, you must make a resolution. Resolution is to be made in the beginning as also at the end of the Yoga Nidra. You may not make a resolution right at this moment, but surely sometimes you have to fix a resolution for yourself. A resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra is like a seed sown in the depth of your consciousness. Anything in life can fail you, but not the sankalpa, the resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra. Keep on listening to me. Do not try hard mentally. Whatever you can manage easily, you can follow. I am practicing Yoga Nidra should be the form your consciousness. The consciousness now is to be rotated.
the rotation has to take place almost mechanically. It is not concentration, but it is just awareness. The name of the limb is to be repeated mentally, and a vision of that part of the body is to be awakened in the mind. Right hand thumb, second finger, third finger, fourth, fifth, palm, wrist, elbow, shoulder, armpit, hip, thigh, kneecap, calf muscle, ankle, heel, sole, the big toe, the second, the third, fourth, fifth. Go on to the left. Repeat the name mentally and have a quick vision. Left hand thumb, second finger, third, fourth, fifth, palm, wrist, elbow, shoulder, armpit, hip, left thigh, kneecap, calf muscle, ankle, heel, sole, left big toe, second, third, fourth, fifth. Take your mind to the back side of your body. The right shoulder blade, the left shoulder blade, the right side of the buttock, the left side, the right heel, the left heel. Go in the front of the body, the top of the head, forehead, right eye, left eye, middle of the eyebrows, right ear, left ear, right cheek, left cheek, right nostril, left nostril, upper lip, lower lip, both lips together, chin, right side of the chest, left side of the chest, the whole of the chest, navel, abdomen. Now the major parts of the body: right leg, left, right arm, left arm, both legs, both arms together, abdomen, chest, the whole of your back, the head, the whole body, 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 and the whole body. Body is resting on the floor. The floor and the body touch each other at a certain point. You have to now become aware of that point.
the meeting point between the right ankle and the floor, the meeting point of the left ankle and the floor, the meeting point between the buttocks and the floor, the meeting point between the back and the floor, the meeting point between the head and the floor. Become aware of the meeting point. This is just an experience. I repeat again, head and the floor, back and the floor, palms and the floor, buttocks and the floor, thighs and the floor, right heel and the floor, left heel and the floor. The whole body. Become aware of the whole body. Now you have to develop certain sensations in the whole body with the help of your willpower. As you go on practicing this, you will be able to do it better in later sessions. Awaken the feeling of cold in the whole body. In the same way as if you were put in a cold room, and how would you experience the cold? And then again change your mind and awaken the feeling of heat in the body. Heat, as if you were put in a hot room. As you go on practicing, you will be able to experience the coldness and the heat through your willpower. Awaken the cold experience throughout the body. You have certainly experienced coolness and the cold climate in the past. And that experience is in your mind. Bring it out. You have had experience of heat in the past, and that's in your mind. Bring it out. Explode the experience of heat and experience of cold alternately. Become aware of the whole body. Visualize the whole body as if you are visualizing it from outside. In the same way as I am able to see your body, you see your own from outside. Take your mind at the root of the spinal cord. At the root of spinal cord, at the root of the tailbone. Now you will have to travel through the spinal cord up to the brain. The last end of the tailbone
in the perineum. Concentrate on that plexus. It is coccygeal plexus, Mooladhara chakra. Go up a bit up at the root of the spinal cord. That is known as Swadhisthana chakra. Up again behind the navel in the spinal cord is the solar plexus. Concentrate on this plexus, Manipur. Up again behind the heart in the spinal cord is cardiac plexus. Concentrate on cardiac plexus. This is Anahat chakra. Go up in the neck. This is Vishuddhi chakra. Go up to the top of the spinal cord in the posterior brain. This is the pineal gland, Ajna chakra. In the same way, you will have to descend. The top of the spinal cord, the pineal gland, Ajna chakra. Go down in the neck, again down behind the heart, down again behind the navel, down again the root of the spine, and at the bottom, at the end of the tailbone. Concentrate on the whole body. Visualize the whole body. Now, with quickness, you try to visualize a few important items. Do not concentrate too much. Go as fast as you can. I will enumerate the names of those things which you must have seen in your life. As I tell you the names, you must quickly visualize them. Flowing river and a boat, the sandy bank and a small dog. Mango tree and a leaf. Guava tree and a fruit. White rose and the rose thorn. Twinkling stars in the sky at night without a moon. The vision of the dark night. And a white rose again with a thorn. Vision of an ocean with massive waves.
the expanding beach, a flying eagle, a flying eagle. Dense forest, tall trees, shady darkness, and a small thatched hut, a clean thatched hut. Rising sun, the symbol Om. Become aware of your sankalpa, the resolution which you may make in future. Anything in life can fail, but not the resolution made in the beginning and at the end of Yoga Nidra. A resolution made is a seed sown in the deeper layers of minds. I am practicing Yoga Nidra. I was practicing Yoga Nidra. Become aware of external environments. You are aware of the body and of the situations around you. And I will chant Shanti and Om. Then Hari Om Tat Sat, then you will get up. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityor ma amritam gamaya, sarvesham swasti bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। The practice of Yoga Nidra is over. Now you may get up and open your eyes. Hari Om Tat Sat. Slowly lie down on the right side. Slowly come up. आंखें बंद, धीरे धीरे करके दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। नमस्ते।